गाइस वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। बम्बार्डमेंट हो गई है भाई, आतिशबाजी हो गई है इस बात की कि गॉड ऑफ रैग्नारॉक का एक कॉम्बैट एंड एनिमीज का वीडियो आया है प्ले स्टेशन के ऑफिशियल चैनल पे जो हमने खोला हुआ इस समय, और ये रहा वो वीडियो। और लोग कह रहे हैं भाई इसका रिएक्शन दो, क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो आया था जिसका मैंने रिएक्शन नहीं दिया था, तो इसको देखेंगे। एंड उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर ऑलरेडी नहीं करा हुआ। और मैं आपको बता दूं, अमेज़ॉन के ऊपर अभी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। देखो आप, प्ले स्टेशन का पल्स 3D हेडसेट जो है वो 7499 का मिल रहा है। एक्सबॉक्स सीरीज़ एस जिसको लेना है भाई 30,499। ऑल दो ये थोड़ा सा और सस्ता मिल रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्राइस। और अगर आपके पास शायद अमेज़ॉन का ICICI पे का क्रेडिट कार्ड है, अमेज़ॉन पे का, तो उस पर आपको 5% और ऑफ मिल जाएगा इन चीज़ों के ऊपर। तो एक्सेसरीज भाई और साथ में कॉन्सोल्स भी सस्ते मिल रहे हैं। एक्सबॉक्स सीरीज एस तो अब ऑलमोस्ट हमेशा ही अवेलेबल रहता है, तो दिस इज़ अ ग्रेट डील। इसको ग्रैब करना चाहते हो तो कर लो। और यहाँ पे MRP उन्होंने चेंज करके 40,000 कर दिया। ये कब हुआ भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 3499 इज़ अ ग्रेट डील फॉर एक्सबॉक्स सीरीज एस। एक्सबॉक्स सीरीज एक्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, मैं इसको सर्च भी करा था, तो एस ही आ रहा है। क्योंकि एक्स तो भाई फिर एक होगी ना, क्रीम चीज़ है यार, वो तो मिलती नहीं ना प्ले स्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स तो बिना सेल के। लेकिन फिर भी दिस इज़ अ वेरी गुड डील अगर आप एक्सबॉक्स सीरीज एस के साथ जाना चाहते हो। तो इसके अलावा भाई गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का जो लॉन्च एडिशन है और शॉप एट सोनी सेंटर पे जो भी चीज़ें, अच्छा एक चीज़ और मैंने देखी, प्ले स्टेशन 5 की जो एक्सेसरीज में अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ यहाँ पे पल्स 3D हेडसेट थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है 7890 का और यहाँ पे मिल रहा है 7499 का। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दोनों ही सस्ते मिल रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर एज़ कम्पेयर टू शॉप एट SC। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़ आप लोगों ने पॉइंट आउट करी थी कि शॉप एट SC पे आपको रैग्नारॉक का मर्चेंटाइज मग जो है, इनामल मग, वो भी मिलेगा, यहाँ पे मेंशनड है। तो सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट शॉप एट SC पे मेंशनड है, अमेज़ॉन पे मेंशन नहीं है। लेकिन अमेज़ॉन की पॉलिसी ये रही है हमेशा से, जो प्री ऑर्डर्स थे जैसे फीफा वगैरह के, तो लोगों को टी-शर्ट्स भी डिलीवर हुई हैं, लोगों ने मेरे को कमेंट्स करके बताया था। तो इस हिसाब से तो आपको इनामल मग भी मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। और अब आते हैं भाई मेन चीज़ पे। इसके बाद का जो सेक्शन है ना वीडियो का, भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, अगर आपको स्पॉयलर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइक अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होके जाना चाहते हो गेम के अंदर, भाई डोंट वॉच दिस वीडियो। बिकॉज ऑल्दो ये ऑफिशियल वीडियो है सेंटा मोनिका की प्ले स्टेशन की, बट स्टिल इसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं, कुछ नए एनिमीज़ हैं जो आप नहीं चाहोगे शायद। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भैया हमें एक भी नया एनिमी नहीं देखना, जो ट्रेलर में दिखा दिया। लेकिन अब गेम को लॉन्च होने में बहुत कम दिन रह गए हैं, तो हम बिल्कुल एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह जाना चाहते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेनलिन रश हो गया भैया, न्यू एनिमीज़ और नए नए एरियाज़ जो हैं वो देखने को मिले। तो पहले ही बता दिया, स्पॉइलर वार्निंग अहेड, आपको नई जगह देखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हो तो यहीं पे वीडियो को रोक दो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। और गाइस वो वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का हैंड्स ऑन गेम प्ले की पूरी रिपोर्ट थी जो प्ले स्टेशन ब्लॉग पोस्ट पे आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आपको न्यू स्क्रीनशॉट्स वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सही सही स्क्रीनशॉट्स हैं। आप देख सकते हो न्यू एनिमीज़ वगैरह और ब्रॉकन सिंड्री और थॉर के साथ ये वाला भाई स्क्रीनशॉट देखो आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है। और भाई म्यूलनीर का साइज़ देखो यार तुम, आधे क्रेटोस जितना है, मतलब क्रेटोस की आधी बॉडी जितना बड़ा है म्यूलनीर। शिट मैन, क्या सही चीज़ बनाई है इन्होंने। और उसके बाद न्यू स्क्रीनशॉट्स ब्रॉकन सिंड्री एरा एंड नाइस मैन। सो ओके या सो मतलब ये देख लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखते हैं भाई वीडियो। From a combat perspective, I always, and I still feel like the meat and potatoes of any God of War game is combat. Oh shit, पूरा सर ही उड़ा दिया भाई, decapitation। Elevated. My name is Roberto Clemente, and all my friends call me Bert. I'm a senior combat animator here at Sony Santa Monica. My name is Kim Wynn, and I'm a gameplay animator. Hi, I'm Sabra, and I'm a senior VFX artist on God of War Ragnarok. My name is Grace Pan, and I'm a gameplay animator in God of War Ragnarok. Hi, I'm Stephen O'Hara, GBA, combat designer on God of War, and I create interesting and memorable creatures that players like to attack and defend against. As an animator, you gave life to characters.
You make them move, you give them personalities, you give them weight. भाई तुम लोग My देख रहे हो? role as a VFX artist is to put the power behind a move. You are in control of fire and earth and water and wind. Whether you are throwing your axe or on the receiving end of an enemy spell, VFX is what really gives the movement and the danger to every move that a character or enemy makes. I work really closely with the design team and the tech art team on this Oh, project new enemies. specifically. We actually work a lot with camera, along with the motion guidance of our capture. great camera team. So I find myself doing fight choreography sometimes. ओ भाई यार एक सेकंड भाई, इसमें से कोई क्रिस्टोफर जज था, मतलब क्रेटोस था यहाँ पे क्या? Great camera team. So I find myself आई थिंक ये क्रिस्टोफर जज है, ये क्रेटोस है। doing fight choreography sometimes. ओ भाई One of the most challenging parts about being a combat designer isn't the technical implementation of creating a creature, but it's really navigating that line between frustrating and engaging. We want to make something that makes players lean forward and focus and really try hard against that enemy and feel good about overcoming that, but we don't want to make them feel defeated if they can't figure something out. And then it feels rewarding when you win, not because it was impossible, but because it was fun and engaging. नाइस। After the last game, we've heard the community cry out for more mini bosses, bigger creatures, and enemy variety, and this time we really leaned into that. हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पिछली बारी लोगों ने बहुत बोला था कि एनिमी की वैरायटी और ज़्यादा मिनी बॉसेस होने चाहिए थे गेम में 2018 में, और यही बात इसने भी अभी बोली कि हमने उस चीज़ को एड्रेस करा है एंड यू विल गेट मच मोर एनिमीज, एंड दिस टाइम वी रियली लीन्ड इनटू दैट। ओ भाई नेक्स्ट लेवल भाई, हमें और नए एनिमीज मिलेंगे बहुत सारे। So in God of War Ragnarok, you're going to be traveling to all 9 realms, and each realm is going to have like its own theme of enemies that are very unique to that यार तुम देख रहे हो टीयर हर जगह पे है हमारे साथ यार, theme प्रॉपर। of enemies that are very unique bosses, bigger creatures, and enemy variety. And this time we really leaned into that. So in God of War Ragnarok, you're going to be traveling to all 9 realms, भाई टीयर का साइज तो बहुत बड़ा है यार, and each realm is ये देखो यार, ये अल्फाइम है। going to have like its own theme of enemies that are very unique to that space. For example, in Alfheim, we're familiar with the Dark Elves, but this time around we're going to be fighting Light Elves, such as the Light Light Elf Elves. Warrior. ओके, हमारी लाइट से तो One लड़ाई of the नहीं key हुई। learnings from the last God of War game is we don't have to think about the camera and how close combat is going to feel. We already have that knowledge, so we can build upon the close camera that we have, and we can iterate on enemies, creating more interesting scenarios. In the last game, Atreus was just starting to fight alongside Kratos, and he was learning from the master tactician. So in this game, he's trying to prove himself a little bit more, and we built upon those mechanics with him. The previous God of War, Atreus was still a kid, right? So he has a lot of dependency on his father. And for this game, you will see Atreus moving more independently on his own as a भाई ट्रेस खुद जंप कर रहा है आगे। अच्छा पहले तो इसकी पीठ पे आया था ना। is moving ओ भाई अपने बो एनर भाई साहब, more independently on his own as a companion. नेक्स्ट लेवल मैन। In regards to VFX for Kratos, I think what the players really love is the powerfulness of it. When you are playing as Kratos, you really do feel like the God of War. And moving into Ragnarok, we want to really make something bigger, make it stronger, make it more of a spectacle. You want them to be like, oh my gosh, I didn't know that the Blades of Chaos could get even better, but look at that. So as Kratos gets more powerful, he's going to have access to newer combos and newer abilities that will increase the combat depth of each weapon. For the blades, one of the moves that I've really enjoyed from previous God of Wars is the combat grapple, and we're going to be bringing that with a new twist. I'm very excited for players to try the blade grapple traversal moves. That brings so much more speed into the movement and the dynamic feel to it. One of the ways we've expanded Kratos combat this time around is we've given more utility and choice to his shield loadout. If you are a parry person, you could really go for a shield that gears towards parrying. If you're a big blocker, then you could choose a shield that will really match your playstyle. One new mechanic or element that I'm really excited about is these combo finishers. Building up the stun meter this time around is going to lead to different ways to basically decapitate the enemy. You're going to be able to choose which weapon you want to have when you kill a guy.
Another feature that we've added for Kratos is his new pre-fall attacks. You could jump off a ledge, and if there's an enemy below you, you could slam down on him. भाई brutal है भाई ये game, brutal है भाई. There's such an emphasis on verticality in some of these fights that it's super engaging. And as Kratos, now that you have so much mobility and that you can also take advantage of that verticality, I think it just adds such a लाइक ये पता है मैं एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ लेकिन ये वही चीज़ लग रही है मुझे कि भाई तुम मोर्टल कॉम्बैट खेल रहे हो बट फिनिशिंग वाली मूव तुम हर एनिमी के साथ खेल सकते हो 3rd-person शूटर के अंदर 3rd-person शूटर क्या है मतलब 3rd-person के अंदर आप वही वाली मूव्स कर सकते हो हर एनिमी के साथ. another interesting next layer level. to a fight. In God of War Ragnarok, we've enhanced the Kratos and Atreus duo. He's going to initiate a little bit more, be aggressive. He's going to fight alongside you, and sometimes even surprise you with his combo abilities too. Some of the new expanded companion actions that you'll see Atreus do leverage the fact that he's older now, he's bigger now. And he's different from Kratos, so his magic has a different flavor. Not only that the fight side by side together, there are also a lot of mini games and player interaction moments. For example, like the puzzle systems and the set pieces. You definitely will see a lot more collaborations between father and son. Valkyries. Oh भाई साहब. Odin must have sent them! What? There's so much that goes into What? इसने बोला ओडिन मस्ट हैव सेंट. ओ भाई. Odin must have sent them! Damn, भाई इस बारी वैल्करीज प्रॉपर अपने गेम प्ले का पार्ट होंगी मतलब पहले तो मेन स्टोरी का पार्ट नहीं थी ना इस बारी तो ओ भाई साहब. There's so much that goes into building a big set piece. You basically iterate and iterate and iterate, and it takes testing and just seeing what works to really figure out the personality of something. Basically, every department gives it their all to make things really spectacular. There were a lot of different times that I would look back at God of War games just through the ages. Before 2018, there were so many amazing, huge boss fights and set pieces that it was a huge inspiration for me on my time on this project. For the old father! Our design philosophy. एक वैल्करी का नाम था मिस्ट. अच्छा शायद हमने पहले भी देखा था या नहीं. तो यहाँ पे लिखा आ रहा था नाम आप देख सकते हो नीचे क्लोज कैप्शंस में जो सबटाइटल्स उसमें लिखा आ रहा है मिस्ट. बोल रही है फॉर द ऑल फादर. Our design philosophy for creating new and memorable enemies is basically making them a combat puzzle, similar to like chess, and focusing on the chess pieces. Each piece has its own theme and its own use. You need to be able to see what's happening in an instant and be able to react as the player. There's a couple of different ways that we go into making an attack very readable for the player. Sometimes we add a signature audio cue, or we'll add the different rings, such as what we did in the last game, that lets you know that this attack is unblockable, you need to dodge it. There's so many different ways that VFX really helps not just show what an enemy is about to do, but show who the enemy really is. Everything you design has to be surrounding the essence of the character and a story. It's what makes it believable and memorable in the first place. I think what I'm most excited about is for players to experience the diversity of enemies that this game has to offer. You will be fighting everything from small little creatures to things that will take up the entire screen. All of their designs run the gamut. I think each one looks so much different from the next one, and each of them have their own play styles and their own little fantasies that go into it. And so I think if you are really into Norse mythology, you'll be very interested to see how Sony Santa Monica has taken some of these creatures and interpreted them for God of War. Everything that goes into the game, there's emotion behind it and intent behind it, and by the time it gets to you, everything that you've seen that you're going to play and experience has been sweated over, bled over, tested, and is fun to play. Oh my god man. क्या बोलूं भाई मैं.
चलो यार, मिलते हैं ऐसी एक और ज़बरदस्त वीडियो में बहुत जल्दी. लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना. टेक केयर एंड बाय बाय.